Hello friends, in this video I am about to teach you My Mother at 66. This is a poem of class 12th about the poet Kamala Das. At first we have to know about the birth and about the specific qualities of Kamala Das. Kamala Das 1934 was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of India's foremost poets. Her works are known for their originality, versatility, and the indigenous flavor of the soil. Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name Madhvi Kutti. Some of her works in English include the novel Alphabet of Lust 1977, a collection of short stories Padmavati, The Harlot, and the Other Stories 1992. In addition to 5 books of poetry, she is a sensitive writer who captures the complex subtleties of human relationships in lyrical idiom. My mother 60 at 66 is an example. Before you read, aging is a natural process. Have you ever thought what our elderly parents expect from us? Now, let's continue this poem. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with ashen like a corpse. Now I explain in English. It was last Friday morning when the poet was driving with her mother from her parental home to Cochin airport. Her mother was sitting beside her in the car. The poet looks wistfully at her mother, who is dozing open mouthed. She notices that her mother's face is lifeless and devoid of color. It looks as if she were dead. The sight is very saddening to the poet. अब हिंदी में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यह पिछले शुक्रवार की बात है जब कवित्री अपनी माँ के साथ अपने पैतृक निवास से कोचीन हवाई अड्डे पर कार द्वारा जा रही थी। उसकी माँ कार में उसके बगल में बैठी थी। कवित्री उत्साह से अपनी माँ को देखती है जो खुले मुंह से झपकी ले रही है। वह यह महसूस करती है कि माँ का चेहरा निर्जीव व रंगहीन प्रतीत हो रहा है। ऐसा लगता है कि वह मर गई है। यह दृश्य कवित्री के लिए बहुत दुखपूर्ण है। अब आइए नेक्स्ट स्टेंजा को एक्सप्लेन करता हूँ। And realized with pain that she thought away and looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children smiling out of their homes. Now I explain this stanza. It is a saddening sight of the poet to behold her mother's old age face. To put away these thoughts, she glances out of the car. The scene of life and energy will lighten her heart. She looks the sight of sprinting young trees alongside and children running out merrily from their homes. आइए अब हिंदी में एक्सप्लेन मैं करता हूँ। कवित्री के लिए अपनी माँ का वृद्ध चेहरा देखना एक दुखद दृश्य था। इन विचारों से अपना ध्यान हटाने के लिए वह कार से बाहर की ओर देखती है। जीवन और ऊर्जा का दृश्य उसके दिल को हल्का कर देगा। वह किनारे किनारे तेज दौड़ते हुए युवा वृक्षों के दृश्य तथा अपने घरों से बाहर निकलते हुए प्रसन्नचित्त बच्चों के दृश्य को देखती है।
Next stanza. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan pale as a late winter's moon, and felt that old familiar ache, my childhood's fear. But all I said was, "See you soon, Amma." All I did was smile and smile and smile. आइए एक्सप्लेन करते हैं इंग्लिश में. आफ्टर द सिक्योरिटी चेक एट द एयरपोर्ट द पोएट स्टैंड्स ए फ्यू यार्ड्स अवे फ्रॉम हर मदर. From there she again looks at her mother's face. It is yellowish and dull like the moon of the late winter. The poet's heart is filled with her old childhood pain. It is the fear of losing her mother. The poet is extremely pained and anxious. Therefore, she can only say to her mother, "See you soon, Amma." She is hiding her pain from her mother. She only smiles and smiles and smiles, bade her goodbye. हिंदी में देखते हैं. हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के पश्चात कवित्री अपनी माँ से कुछ गज दूर खड़ी होती है. वहाँ से वह अपनी माँ के चेहरे को दोबारा देखती है. यह पीला तथा शरद ऋतु के चंद्रमा जैसा दिखाई देता है. कवित्री का दिल अपने बचपन के पुराने दर्द से भर उठता है. यह अपनी माँ को खोने का भय है. कवित्री बहुत ही दुखी तथा चिंतित है, इसलिए वह अपनी माँ से केवल कह सकी, "जल्द ही आपसे मिलती हूँ अम्मा." वह अपनी माँ से अपना दर्द छिपा रही है. वह केवल मुस्कुराती है तथा उसे अलविदा कहती है. दोस्तों, धन्यवाद.